and it's been a long day for Mr. Gashe also. We've had a seminar discussion a little while ago, and he was the star because everybody thought he was the most glamorous man there. So I don't need to introduce Mr. Gashe to you all. We know that he's here as a producer. He has many hats. He actually collects hats. So he wears many a hat. One of them is the producer hat, and he is here today as a producer of the film of Sumitra Bhaveji, Dithi. I would like to ask you questions first, but since all of you are here, please, you also ask your questions. You keep wanting one-to-one. I have moved away from him, so that you can have a one-on-one. I won't be there. Is that all right with you all? Okay. So the first thing is, how long have you been a producer, and what are your productions besides Dithi? I became producer with her film called Astu, which was in this festival. And this is a daughter-father story where father has Alzheimer. And in fact, it started because making a film. They said, we want people to be aware that there is an illness like this. When I read the script, I said, look, your intentions are good, but your script will not serve the purpose you have in mind. Because the way it is written, it looks like a thriller. Something like 1942. So I guided them to Sumitra Bhaveji. Earlier I had worked with her in a film called Devrai, and I absolutely adore the way she approaches filmmaking and the effort she takes to research her script, not only the script, but because it's on that film was on schizophrenia, the effort she made with the information, and found that she is the woman who can portray, who can make a good film without compromising information which goes passively. So I enjoyed doing that film, and I'm sure you probably have seen it, it's here. And she wrote a script of Astu, which is amazing. And he agreed that let's do the film. We did the film, but after the shooting, he ran out of his funds. We saw the rough cut and we all loved it, including me. So he never asked me money. He said, let's wait, I will collect more funds and then we'll complete the film. But coming from medicine and working for a regional film, I knew you can't afford to take a patient on operation table, open his abdomen, and then start looking for the instruments. I said the patient will die. So I volunteered and asked him, if I help you complete the film, will you return my money? So he said, of course, after the film, the moment it is sold, I'll give you your money. So we completed the film. After the film, we were invited to so many festivals. Film was very good. So it was like you invite somebody for a marriage and everybody offers you air ticket and a 5-star hotel for 3 days for honeymoon. So I did honeymooning with the film to several festivals. And at the end of it, when we returned, and the question came now how to recover the cost, realized that no distributor is going to buy that film. In fact, he is going to ask more money to release the film. I was in a fix because I put my provident fund and accumulated pension to complete the film. I retired as a professor of psychiatry, and so fortunately I had lump sum amount in my hand. And having exhausted that and finding nobody is willing to buy, I was left with no choice but to use my brain. And I started doing private screenings for students, medical students. And after the film, discuss the film
And you'll be surprised to know, after about 2 or 3 such shows, I started getting invitations to come and show the film, but not only show the film, also discuss the film. And I realized the first time that though people like the film, they miss out on a lot of things which are in the film, because they have not learned what to see in the film and how to see it in the film, or how to listen. After the discussion, most of the people saw the film again. And not only saw again, many of us got given written feedback that we wish we had seen this film earlier, we would have behaved differently with our grandparents. सर, आप जो ये पिक्चर कर रहे हैं, इस पिक्चर का मेन स्क्रिप्ट क्या है जो दर्शकों तक बताने की कृपा करें? स्क्रिप्ट ये है कि एक आदमी है जिसका एक पिताजी बहुत बीमार है, वो चल नहीं सकते हैं, तो वो आप इधर रहिए, चल नहीं सकते हैं, तो इसी को लेकर और ऊपर एक बड़ा बगीचा बना है, मतलब छात में उसका बहुत पेड़ है, पौधे हैं, तो पिताजी मर जाते हैं, तो ये पेड़ पौधे एक दिन बीच में वो समझ जाते हैं कि कोई एक क्लाउड फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद उससे एक संबंध बन जाता है, और आखिरी में वो ये बताना बहुत ज़रूरी नहीं है कि आखिरी में क्या होता है, ये आप फिल्म में देखिए, लेकिन ये इसके बाद एक संबंध बन जाता है। ये पिक्चर करके आप बहुत खुश हैं? एक तो ये पिक्चर है, सिनेमा है, बहुत ज़्यादा डायलॉग नहीं है, ये कैमरा की दृष्टि से आप ये देखिए, कलात्मक पिक्चर है, आप बोल सकते हैं, पर मेरे लिए तो ये जैसे कि और भी अलग अलग पिक्चर है ना, सभी एक ही है, ये मेरे प्रोड्यूसर है। तो आपका शुभ नाम मैम? मोनालिसा मुखर्जी। मोनालिसा मुखर्जी। ओके मोनालिसा जी, आप ये जब पिक्चर की जब प्रोड्यूस करने की सोचे तो क्या सोच के इसको किया आपने? जैसा कि मैंने कहा कि साधारण लोगों की कहानी लोग नहीं बोलते, या तो बहुत ही कुछ कर रखा सुपरमैन की कहानी लोग बोलते हैं, या जिसका कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे लोग जिनका कोई परिचय नहीं, जो इस संसार में जिनका कोई उस सांसारिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक जो बहुत ही विफल एक प्रकृति प्रेमी मनुष्य है, उसकी कहानी कौन बोलेगा? तो मुझे ऐसी कहानी कहनी है, सुननी है, बनानी है, इसलिए मैंने ये फिल्म प्रोड्यूस की। थैंक यू। और कहना चाहूँगी कि साहित्य में हिंदी में मेघों का प्रेम नहीं हुआ है मनुष्य के साथ। कालिदास में दूध बनकर गया था मेघ, तो इस तरह की कल्पना साहित्य के हिसाब से भी कोई बहुत ही अनूठी कल्पना है, जिसको हम लोगों ने चाहा कि हम पर्दे पे दिखाएं। आप जब डायरेक्शन दे रहे थे, इस पिक्चर का डायरेक्ट कर रहे थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? पहली पिक्चर थी तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो था, लेकिन वो टेंशन जो रहता है कि फाइनली जैसे बचपन से सोच के आया हूँ कि पहले फिल्म बनाएंगे और फिर पिक्चर बनाना है, ये शुरुआत है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले जो फिल्म बना रहा हूँ उसमें जो एज ए फिल्म मेकर जैसे मैंने खुद को नर्चर किया हो वो डिलीवर कर पाऊँ। इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ, बिकॉज हम लोग शूट किए थे 2019 में, आज 3 साल हो गए पिक्चर में, बट दिस फिल्म टू मोर देन 3 years बिकॉज लिखने में 2 साल गया, ऑलमोस्ट 5 years ऑफ जर्नी। एंड यस, जैसे बोला जाता है either you put money or time. Here I believe in time because creation needs time. That is from Big Bang to wherever you go, time needs to be invested to create something that will remain there. So yes, overall it was a great experience, and eventually it's up to all the viewers and everyone how they like the film. But I try to do my bit. Hi, this is Bhutan Mukherjee, the producer of my movie. आप ये पिक्चर बनाने पर इतने खर्चे किए, क्या सोच के? As usual, optimist हूँ। आशा करता हूँ कि पैसा वापस भी आ जाएगा। अच्छा। देखते हैं।
पिक्चर का जो आपने सरकमस्टांस देखे वो आपको कैसे महसूस हुआ? देखिए, ये पिक्चर का जो जर्नी है ये शुरू हुआ 2021 नवंबर में एस्टोनिया में, टैलिन शहर में, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, टैलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल, वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग गोवा में इफ़ी में हम लोग इंडियन पैनोरामा में थे। उसके बाद मुझे आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपने जो पॉजिटिव बोला ना कि नहीं, मैं पिक्चर, आपको जिसने सवाल किया कि ये पिक्चर क्या आगे जाके सक्सेस होगी, आपने पॉजिटिव बोला, ये मैं आपके लिए बधाई का संदेश देती हूँ कि हाँ, रियल में आप सक्सेस होंगे। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये लोगों तक पहुँचे, और पहुँचाने का जो दायित्व है ये कितनी देर की पिक्चर है सर? 96 मिनट्स।